हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हैप्पी संडे। राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। हेलो जी, हेलो, राधे राधे आप सभी को। क्या कर रहे हैं सब, कैसे हैं? हेलो जी, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? राधे राधे आप सभी को। हेलो जी, हेलो, राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। हेलो जी, हेलो, कुकिंग विथ पैराडाइज प्रिया। हेलो डियर, कैसे हो? राधे राधे। लाइक डन, थैंक यू सो मच। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं प्रिया जी? स्वागत है आपका मेरे लाइव में। हेलो फ्रेंड, हेलो प्रिया जी, आई एम गुड। यूट्यूब में मैं भी बढ़िया हूँ प्रिया जी। और बताइए क्या बनाए हैं ब्रेकफास्ट में आज? मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, खाना बनाना है ना, सबका नाश्ता हो गया है। आप क्या बनाए थे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डियर। हेलो जी, हेलो, हेलो, चना पूरी, अच्छा जी, ठीक ठीक। अच्छा नाश्ता बना था आपके यहाँ तो। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। राधे राधे आप सभी को। हेलो, कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। हेलो जी, हेलो। तो हेलो जी, हेलो फ्रेंड, हेलो, हेलो जी, जितने भी लोग लाइव में हैं प्लीज़ लाइव को लाइक करते जाइए। स्क्रीन पर डबल क्लिक करके लाइव को लाइक करते जाइए। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स आप लोग। हेलो जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव में। हेलो, लाइव को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स। और कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। हेलो जी, हेलो, हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का मेरे लाइव में। कैसे हैं आप लोग? तो आज का मेरा लाइव चलने वाला है, लंबा है ना फ्रेंड्स, बहुत देर बाद लाइव स्टार्ट की हूँ। हेलो जी, हेलो, हेलो फ्रेंड। और बताइए संडे स्पेशल आप लोग क्या 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 बनने वाला है? आज संडे है तो सब फ्री रहेंगे। संडे के दिन वैसे काम ज़्यादा हो जाता है ना, फ्री कम रहते हैं, काम ज़्यादा रहता है। संडे है तो आज ये कर लेते हैं, संडे है तो आज वो कर लेते हैं। जैसे मैं ही आज कपड़ा वगैरह धोई आराम दिलाने पड़े। आज एकादशी है। हाँ हाँ बेटा, आज एकादशी है। हाँ, हेलो जी, हेलो, राधे राधे, आज एकादशी है। हाँ हाँ, हेलो जी, हेलो, स्वागत है सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, है ना। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड आप सभी का मेरे लाइव में। तो मैं कुकिंग करते करते आप लोग के साथ बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, है ना। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग?
फ्रेंड्स स्क्रीन पर डबल क्लिक करके लाइव को लाइक करते जाइए। जितने लोग भी लाइव में हैं प्लीज़ लाइव को लाइक करते जाइए। कुछ नहीं, बस स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है, लाइव हो जाएगा। और कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, है ना। हेलो जी हेलो। तो आज मैं बना रही हूँ, आज है एकादशी फ्रेंड्स। तो आज एकादशी है तो बनेगा रोटी सब्जी, है ना। बेटू के लिए बट बनाना पड़ेगा मुझे दाल चावल, क्योंकि बेटू नहीं खाता है तो बनाना तो पड़ेगा उसके लिए। क्या दूँ बेटा? अच्छा नहीं लगा? और क्या चाहिए तो फिर आपको? हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे आप सभी को। लाइव को लाइक करते जाइए, आप लोग लाइव को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स। केला खाएगा? हेलो जी हेलो फ्रेंड, हेलो स्वागत है। हेलो सिज जी, रसोई में श्वेता जी, हेलो हेलो चुन्नी मानीपुरी जी, हेलो हेलो। स्वागत है सभी का मेरे लाइव में। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे आप सभी को फ्रेंड्स, राधे राधे। और बताइए कैसे हैं आप लोग? हेलो सभी को, राधे राधे। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स टमाटर चटनी, है ना। हमारे यहाँ लाए हैं बहुत सारा टमाटर, मुझे बनाना है टमाटर सॉस। तो ताज़ा टमाटर है इसलिए मैं बना रही हूँ टमाटर चटनी, है ना। क्योंकि बहुत सारा टमाटर लेके आए हैं मार्केट से, सॉस बनाना है करके। तो टमाटर जो है ना ताज़ा है, तो मैं बना रही हूँ आज टमाटर चटनी और बनाऊँगी रोटी। आज है एकादशी, तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ रोटी रोटी ही खाते हैं, है ना फ्रेंड्स। चावल नहीं खाते हैं। चावल और दाल जो है बेसिकली बस बनेगा, वो नहीं खाते हैं रोटी, इसलिए। और आप लोग क्या है एकादशी के दिन चावल खाते हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। हेलो प्रेसा जी, कैसे हैं आप? राधे राधे। हेलो प्रेसा जी, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। और कैसे हैं डियर? हेलो हेलो, स्वागत है प्रेसा जी आपका मेरे लाइव में। कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या नाश्ता हुआ? आप हो गया आपका नाश्ता वगैरह? हाँ बेटा, केला चाहिए? हाँ ले लो बेटा, खा लो, चलो इधर ले लो। वाह, निकल तो जाएगा वहाँ से खाना। हेलो जी हेलो। और प्रेसा जी बताइए आपका ब्रेकफास्ट हो गया?
ना। अच्छा जी, और बताइए। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का लाइव में। कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड। जितने लोग भी लाइव में हैं प्लीज़ कमेंट करते रहिए और स्क्रीन पर डबल क्लिक करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, है ना। बगल में काम चल रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ खा रहे हैं बेटा, हाँ खा लो। बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो सोना। हाँ बेटा, क्या है बेटा? हाँ कर। मैं बंद करती हूँ अंदर से, ठीक है। हाँ, थैंक यू बेटा। हेलो हेलो फ्रेंड। हाँ बेटा, हाँ तो रख दे, हम आ गए सामने। हेलो जी, हेलो, स्वागत है सभी का लाइव में। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। हेलो विद्या जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे लाइव में। बहुत दिन बाद आया लाइव में। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, हेलो, स्वागत है जी आप सभी का लाइव में। कैसे हैं? राधे राधे आप सभी को। राधे राधे, राधे राधे। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। हेलो विद्या जी, स्वागत है आपका लाइव में।
चलिए मैं ना सब्जी काटते काटते बात कर रही हूँ है ना आप लोग से। तो बाकी समय मेरे को नहीं हो पाता है ना लाइव करना, इसीलिए मैं खाना बनाते बनाते ही लाइव आती हूँ है ना। ऐसे में क्या है, बात भी हो जाता है, मेरा काम भी हो जाता है। बाकी समय ना बेटू डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं लाइव नहीं आती हूँ। हेलो जी, हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और विद्या जी क्या बनाए हैं आप खाना में? हेलो फ्रेंड, स्वागत है जी सभी का लाइव में। तो चलिए अब गैस स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट करूँगी बनाना खाना है। लाइटर भी किधर किधर हो जाता है। हेलो हेलो सीजी रसोई में श्वेता, हेलो जी हेलो, स्वागत है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? चुन्नी मानीपुर जी, स्वागत है जी, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं उसको भी बताइएगा। है लाइव को लाइक करते जाइए फ्रेंड, जितने लोग भी लाइव में हैं प्लीज़ लाइव को लाइक करते जाइए आप लोग। और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो हेलो फ्रेंड, जो हेलो हेलो जी हेलो। चलिए अब सेट कर ली हूँ मैं। फिर गर्म होगा फिर डालूंगी मैं फ़ौरन, फिर टमाटर को काट के डालूंगी है ना। फिर आटा भी भिगाना है मुझे। हेलो जी हेलो हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का लाइव में। तो आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ टमाटर सॉस है ना, बनाऊंगी। बहुत सारा टमाटर है, इसलिए आज मैं टमाटर की चटनी भी बना रही हूँ, ताज़ा टमाटर है करके है ना। हेलो जी हेलो।
कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए सेट करती हूँ, फिर आप लोग से करते रहूँगी बातें। इधर मैं बनाऊँगी खाना। हेलो हेलो। रखती हूँ इधर, जैसे किसी को कमेंट आता है ना तो पढ़ के बनता है फ्रेंड्स, है ना। हेलो जी। हेलो अर्पित जी, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। कैसे हैं आप? राधे राधे, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे लाइव में। राधे राधे जी, राधे राधे। और बताइए हो गया आपका ब्रेकफास्ट? ठीक, आपका ब्रेकफास्ट हो गया? और बताइए। अब मेरा चैनल मोनो होने वाला है प्लीज़, तो आप लोग ना ऐड जरूर देखना, है ना। जब भी मोनो हो जाएगा बताऊंगी, क्योंकि मेरे लाइव मतलब मेरे वीडियो में ऐसे ही ऐड आते रहता है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि मेरा चैनल मोनो है कि क्या है ना। बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग जरूर ऐड वगैरह देखिएगा, सपोर्ट करिएगा। और सब बढ़िया। आप बताइए कुछ। कब होगा मोनो? बस एक दो दिन में ना हो ही जाएगा। मेरा वॉच टाइम ज़्यादा नहीं बचा है ना, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है ना। तो अपडेट जैसे ही अपडेट होगा ना फिर हो जाएगा, है ना। एक दो दिन में हो जाएगा, बस एक दो दिन का ही समय है। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, क्योंकि कुछ वॉच टाइम जो है वो माइनस हो जाता है ना, तो 3 से 4 दिन में हो जाएगा बस। क्योंकि अपडेट होने में समय लगता है, और अपडेट के साथ साथ ऐड होने के बाद माइनस भी हो जाता है ना। तो 3 से 4 दिन मान लीजिए, इतने दिन में मेरा चैनल जो है हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि मतलब अप्रूवल क्या होता है, कैसे होता है ना। वैसे तो मैं हाफ मोनो कर ली हूँ, अब देखते हैं, है ना। कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू, नाइस, थैंक यू सो मच, सो मच। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, है ना। सबका सपोर्ट रहेगा तो चैनल जल्दी आगे जाएगा। राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू।
ओके, धन्यवाद। और बताइए अर्पित जी, क्या खाए आप, क्या बना है आपके यहाँ? आज तो एकादशी है, तो हमारे यहाँ रोटी सब्जी बन रहे हैं। बेटों के लिए बनाऊंगी दाल चावल। आज है लाइव में, हाँ है तो, पर चलिए मैं आपको पिन कर दी हूँ, है ना, देखते हैं नए लोग आएंगे ज्वाइन करवाते हैं। कमेंट बहुत कम लोग का आता है ना, सब कमेंट नहीं कर पाते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो विद्या जी। अर्पित भाई, आप विद्या दीदी को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं ना, उनकी तरफ से आपको रिटर्न मिल जाएगा। विद्या जी भी हैं लाइव में। हेलो, सॉस बनाना है करके बड़े बड़े टमाटर को रख दी, जितना छोटा टमाटर है ना सबका चटनी बना रही थी। अच्छा नहीं करूँ क्या? चलो ठीक है, बता देती। मेरे को लगा अगर आपको चाहिए तो करके, है ना। आपका सपोर्ट आईडी है क्या अर्पित भाई? इधर बार बार देखना पड़ता है करके ना, एक को ना सामने रखती है ना, ऐसे कमेंट रीड करते बनता है करके। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो चुन्नी जी, राधे राधे, राधे राधे आप सभी को। कमेंट करते जाइए आप लोग, जितने लोग भी लाइव में हैं भर भर के कमेंट करिए, है ना, जितने लोग भी लाइव में कमेंट करते रहिए। हेलो हाय, राधे राधे, राधे राधे, कमेंट करते रहिए आप लोग।
और जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइव को लाइक करते जाइए। चटनी को डालने, हाँ मतलब टमाटर को डालने के बाद आटा वगैरह गूंदूंगी मैं भी। पूरा टमाटर को डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी नमक वगैरह, फिर ढक दूंगी, है ना। हेलो जी, स्वागत है सभी का लाइव में। हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का लाइव में। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे जी, राधे राधे। लाइव को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स, जितने लोग लाइव में ऐड हैं प्लीज़ लाइव को लाइक करते जाइए आप लोग। और कहाँ कहाँ से कमेंट ऐड हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। चलिए मैं रोटी के लिए आटा तैयार करती हूँ फ्रेंड्स, है ना। सब्जी घर मेरा बन रहा है, चटनी।
हेलो जी, हेलो। यहाँ पे ऐड करें नमक। और ऐड करें थोड़ा सा चीनी। टमाटर चटनी में मैं शक्कर डालती हूँ ना, तभी मेरे को अच्छा लगता है फ्रेंड्स, है ना। इससे ना चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आटा भी भिगा लेती हूँ। चावल नहीं बनेगा आपके यहाँ? नहीं जी, चावल नहीं बनेगा। आज एकादशी है तो रोटी रोटी ही खाना है सबको। और बेटू के लिए बस बनाऊंगी दाल और चावल कुकर में एक साथ, है ना, क्योंकि वो नहीं खाता है रोटी, इसलिए जी। बाकी हम लोग सब रोटी रोटी ही खाने वाले हैं। दरवाजा खोलो तो।
ये चार्जिंग में लगा दूँगा फ़ोन को, ज़्यादा चार्ज नहीं है इसमें। हाँ रोटी में सब्जी थोड़ा सा लगेगा। हेलो जी हेलो। हेलो जी हेलो, स्वागत है फ्रेंड आप सभी का लाइव में। तो आटा को ना भिगा के रख देती हूँ, थोड़ा देर भीगेगा ना फिर अच्छे से इसको गूँथ के बनाऊंगी रोटी। हेलो जी हेलो भोजराम साहू। हेलो भाई कैसे हैं आज? स्वागत है आपका मेरे लाइव में। मोस्ट वेलकम है, आपका वेलकम है मेरे लाइव में। कैसे हैं आप? लाइव को लाइक करते जाइए प्लीज, आप लोग लाइव को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स। मैं मस्त हूँ, आप बताओ। सब बढ़िया है भाई, है ना? सब बढ़िया। खाना बना रही हूँ, एकादशी है आज तो रोटी बनाने वाली हूँ, रोटी सब्जी। और आप जब यहाँ क्या बना है कमेंट करके ज़रूर बताना है। आटा को भिगा के रख दी हूँ। परसों आया था आप टमाटो सॉस बना रहे थे तो। अच्छा ठीक ठीक, नहीं आते हो तो कमेंट करके जाया करो भाई, है नहीं? तभी पता चलेगा भाई आप लाइव में आए थे करके। आते हो ना तो कमेंट करके जाया करो, है नहीं? हेलो सीधी रसोई विक्रेता, हेलो जी हेलो, स्वागत है सभी का मेरे लाइव में। आज क्या बना रहे हो? अभी तो मैं खाना ही बना रही हूँ, अपना डेली रूटीन है ना। फिर आज तो मुझे बहुत सारा चीज़ बनाना है। आज टमाटर का सॉस बनाऊंगी, पर लाइव नहीं बनाऊंगी क्योंकि लाइव तो उस दिन की हूँ, आज उसका वीडियो बनाऊंगी, है ना। लाइव तो उस दिन कर ली थी और आज मेरा लाइव वैसे लंबा चलेगा, देखते हैं लाइव में रहेगा तो लाइव भी कर लूँगी, बाकी वीडियो बनाऊंगी। स्पेशल कुकिंग वाला नहीं है, नॉर्मल रहेगा आज का मेरा लाइव जो है। आज संडे कुछ स्पेशल नहीं है आज, क्योंकि आज मेरा काम बहुत है ना। तो मेरा टमाटर जो है वो ख़राब हो रहा है तो मुझे बनाना है उसका सॉस। तो आज स्पेशल में कुछ नहीं है, आज नॉर्मल कुकिंग है और बनाऊंगी सॉस को आज कंप्लीट करूंगी, क्योंकि टमाटर जो है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो आज मैं बनाऊंगी सॉस। हेलो 10 लाइक डन, थैंक यू सो मच। कमेंट करते रहिए, आप लोग कहाँ कहाँ से हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करते रहिए।
अब मैं बनाऊंगी इधर बेटू के लिए चावल और दाल को एक साथ कुकर में, है ना फ्रेंड्स। तो मैं लेती हूँ टिफ़िन, ये टिफ़िन में बनाऊंगी उसके लिए चावल और कुकर में बनाऊंगी दाल। कोयला कर देना कोयला का उपयोग नहीं करते भाई, क्या आप बताएं, है ना, कोयला का नहीं यूज़ करते हैं। पिछले साल शौक से ना कर ली थी, वो आलू चिप्स वगैरह मैं डालूंगी पाउडर बना के करके, और ना रखा है जैसे तैसे, है ना, रखा हुआ है। तो कोयला का यूज़ नहीं होता है, कोयला नहीं करूँगी। उसका सॉस ही बनाने के लिए मंगाई हूँ, तो सॉस बनाऊँगी, है ना, सॉस बनाना है करके, क्योंकि ना अब मैं घर में ही बनाती हूँ अपना खाने के लिए सॉस, तो उसी के लिए मंगाई हूँ तो बनाऊँगी। कोयला का यूज़ नहीं होता है। बेटू के लिए बनाई थी वाला सॉस ना, एकदम मस्त बन के तैयार हुआ है ना, देख सकते हैं, एकदम गाढ़ा मस्त अच्छा तैयार हुआ है, देख सकते हैं, बेटू के लिए बनाई थी। उस दिन का ना जो लाइव वाला सॉस है ना, यही है ना। तो कितना बना था उस दिन का सॉस, दिखाऊं मैं आपको, ये देखो कितना बनकर तैयार हुआ था, है ना। ये दोनों उस दिन का लाइव जो की थी ना। आप कहाँ से हो, बेमित्र से हूँ भाई, बेमित्र से, देख सकते हैं ना। उस दिन जो लाइव में बनाई थी ना टमाटर सॉस, वो यही है, इतना बनकर तैयार हुआ है। अभी इससे ज़्यादा और बनाना है हम लोग के लिए, ये तो बिना मिर्ची वाला है, अभी मिर्ची वाला बनाऊंगी हम लोग के लिए, है ना। तो जितना वो यूज़ करना रहता है ना, उतना को मैं निकाल कर रखती हूँ बाहर में। फिर बाकी सॉस जो है ना फ्रिज में ही रहता है, और फ्रिज में रखेंगे ना तो साल भर चल जाता है ना, खराब नहीं होता है। फ्रिज में रहता है ना तो साल भर खराब नहीं होता है। अभी मैं पिछले साल मार्च में बनाई थी ना, वो सॉस मेरा अभी तक चल रहा है ना। और कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह की जरूरत नहीं रहता है, बस उसमें मैं विनेगर का यूज़ करती हूँ। मैं तो तीखा नहीं खाता हूँ हाँ। तो चलिए चटनी के लिए ना मैं धनिया मिर्च का भी तैयारी कर लेती हूँ, और बेटू के लिए चावल वगैरह भी धो लेती हूँ। हेलो जी, हेलो। हेलो, क्या सब्जी बना रहे हो। हेलो जीतू भाई, स्वागत है। मैं टमाटर चटनी बना रही हूँ आज, है ना। वही बताइए ना, टमाटर मंगाई हूँ बहुत सारा सॉस बनाने के लिए, तो उसका यूज़ करना है करके ना टमाटर चटनी भी बना रही हूँ और सॉस भी बनाऊंगी, है ना। क्योंकि घर का काम हो जाता है ना, तो एक साथ सारा चीज़ नहीं हो पाता है। प्रणाम दीदी, खुश रहो जीतू भाई, खुश रहो। कैसे हो आप, स्वागत है आपका अपने लाइव में। जीतू भाई, नाश्ता पानी हो गया। स्वागत है जीतू भाई, स्वागत है। जीतू भाई आता है ना लाइव में, तब मजा आता है ना जीतू, खास भी मेरी तरह से हूँ। हाँ भाई हाँ। जीतू भाई आपका कमेंट नहीं आ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं जानती भाई, है ना, यहाँ का, पर यहाँ मैं बेमेतरा की हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं जानती, है ना। और मेरे लिए भी सब्जी भेजो ना दीदी। हाँ जीतू भाई पक्का, टेस्टी वाला टमाटर चटनी बना रही हूँ, है ना, और रोटी भेजती हूँ।
हेलो, काम कर रहा हूँ। ओके भाई, ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में आए उसके लिए। भोजराम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ क्या सब्जी बनाई है जीतू भाई? चलिए मैं थोड़ा सा कलिंदर वगैरह काट लेती हूँ, है ना, फिर बनाऊंगी रोटी को। चाकू थोड़ा छोटा हो जा रहा है ना, कलिंदर बड़ा हो गया है। हेलो, मेरा तो बहुत अच्छा लगता है दीदी, इसलिए आपको बोला टमाटर चटनी सब्जी। अच्छा ठीक ठीक, हाँ जीतू भाई, हाँ पक्का भेजती हूँ, ठीक है, पार्सल करती हूँ आपको पैक करके टमाटर चटनी को। बेटू को भी पसंद है टमाटर चटनी। और मैं तो ना प्याज लहसुन वगैरह सब डाल के बनाती हूँ टमाटर चटनी को, तभी अच्छा लगता है। हेलो जी, हेलो, स्वागत है सभी का। तो ये है मस्त कलिंदर। जित्तू भाई आ जाओ खाने। हेलो, हेलो फ्रेंड, हेलो, स्वागत है जी आप सभी का लाइव में। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड, हेलो। राधे राधे जी, राधे राधे निर्मला। सब लोग ठीक है दीदी, बच्चे लोग बढ़िया हैं दीदी, बताओ। हाँ जीतू भाई सब बढ़िया, आप बताओ आपके यहाँ सब बढ़िया है? सब बढ़िया है भाई, है ना? सबके आशीर्वाद से सब बढ़िया है, आप बताओ। और जवारा विसर्जन वगैरह कैसा था आप लोग के यहाँ? सब बढ़िया जीतू भाई, है ना? जो जवारा विसर्जन अच्छे से हुआ आप लोग की तरफ?
कैसे हो दीदी? मैं भी बढ़िया हूँ भाई। आप बताओ, आप कैसे हो? आपके यहाँ सब बढ़िया है? और आप लोग कितने फैमिली मेंबर होते हो? जित्तू भाई अभी तक नहीं बताया है ना। आप लोग कितने लोग होते हो? जय माता दी। धनिया और मिर्च का पेस्ट भी तैयार करूँगी, है ना, टमाटर चटनी में डालने के लिए। हेलो। मैं ठीक हूँ दीदी, हाँ। और बताओ जितने जितू भाई, आप लोग कितने लोग होते हो? कितने फैमिली मेंबर्स हो आप लोग? मेरे जी मेरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? आपके जीजा जी घर में हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी ड्यूटी जाएंगे बाद में, है ना, ड्यूटी करके आ गए हैं। अभी घर में आराम कर रहे हैं। फिर से 2 बजे उनका ड्यूटी है ना, शिफ्ट वाइज रहता है तो। जीतू भाई का कमेंट ना बहुत ही डिसेंट तरीका से रहता है, बहुत ही अच्छा कमेंट रहता है उनका, है ना। इसीलिए जीतू भाई मेरे लाइव में आते हैं ना तो अच्छा लगता है। हाँ। हेलो चमेली जी, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। कैसे हैं आप? जीतू भाई ज्वाइनिंग कराना होगा तो बताना, है ना, क्योंकि आप मना कर देते हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। जिसमें कराना होगा तो बता देना, है ना, पिन कर दिए रहूंगी। ज्वाइनिंग कराना होगा तो बताना जीतू भाई, ठीक है। क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ आज रोटी सब्जी, है ना, तो आज एकादशी है तो बना रही हूँ रोटी सब्जी। और बेटू के लिए बन रहा है थोड़ा से दाल और चावल एक साथ कुकर में। और अभी मैं बना रही हूँ टमाटर चटनी, फिर बनाऊंगी रोटी। तो धनिया साफ कर रही हूँ फ्रेंड्स, है ना, धनिया साफ करते करते आपको। आज संडे स्पेशल नहीं, संडे स्पेशल आज कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरा चल रहा है नॉर्मल कुकिंग। फिर मेरे को बनाना है बहुत सारा टमाटर सॉस, इसीलिए आज मेरे को कुछ स्पेशल कुकिंग नहीं है, है ना। हेलो जी, हेलो। लाते हैं एक आज संडे को स्पेशल कुकिंग, है ना। आज तो नॉर्मल कुकिंग चल रहा है, क्योंकि आज मेरा और बहुत सारा कुछ कुछ काम है। मेरे जीजा जी को आराम करने दे दीजिए। हाँ भाई, कर रहा है उनका, और क्या काम है ना, आराम और ड्यूटी, और थोड़ा से बेटू के साथ मस्ती। जित्तू भाई आप बताए नहीं, आप लोग कितने लोग हो घर में? आज भी टमाटर सॉस बनेगा? हाँ जी, आज भी टमाटर सॉस बनेगा, क्योंकि उस दिन मैं बनाई थी बेटू के लिए, है ना, बिना मिर्च वाला बनाई थी। आज मैं मिर्च वाला हम लोग के लिए थोड़ा से मसाला वगैरह ज़्यादा यूज़ करूँगी। थोड़ा से बच्चा के लिए बना रही हूँ करके ना, उसमें कम मसाला यूज़ करके बनाई थी। आज हम लोग के लिए बनाऊँगी तो थोड़ा से मसाला वगैरह एक्स्ट्रा रहेगा। और क्या बोलते हैं,
मिर्च वगैरह भी एक्स्ट्रा रहेगा, है ना। तो अभी हम लोग के लिए बनाऊंगी, घर वालों के लिए। अभी तो बस बेटू के लिए बनकर तैयार हुआ है ना फ्रेंड्स। तो धनिया भी अच्छे से साफ कर ली हूँ। अब इसको मैं बनाती हूँ पेस्ट सब्जी के लिए। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का लाइव में। आप लोग कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेटू के लिए निकालूंगी बिना मिर्च वाला, फिर डालूंगी धनिया मिर्च का पेस्ट को। हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, नहीं डाल देती है ना। हेलो जी, हेलो हेलो फ्रेंड, स्वागत है जिस मैसेजेस। तुम तो मेरे को लालच दे रहे हो दीदी। नहीं दे रही भाई, आजा खाने, लालच नहीं दे रही हूँ, खाने आ जाओ जीतू भाई, मैं बुला रही हूँ। आ जाओ भाई खाने करके। मैं क्यों लालच दूंगी भाई, बता। मस्त बन गया है चटनी, है ना, और रोटी भी बनने वाला है। आ जाओ, रोटी सब्जी खा लेना, मस्त है। पार्सल करा दूं क्या? तो बेटों के लिए निकालती हूँ, है ना। फ्रिज में हाँ आ रही हूँ। चलिए बेटू के लिए इसमें ना निकाल देती हूँ, फिर डालूंगी मैं इसमें धनिया मिर्च का पेस्ट और पकाऊंगी, है ना। आज मैं बना रही हूँ टमाटर चटनी और रोटी, है ना। हेलो जी, हेलो मुरली पटेल जी, हेलो। और तो देख सकते हैं, थोड़ा सा और पकाऊंगी, धनिया और मिर्च पेस्ट डाला है इसलिए हल्का सा, फिर इसको बंद करूंगी, है ना। फिर बनाऊंगी रोटी।
हेलो जी, हेलो हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का लाइव में। देखो आटा को पहले से भिगा के रख देते हैं तो मस्त भीग करके तैयार हो जाता है, तो ज़्यादा ना गूँथने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। मैं ऐसे ही पहले से भिगा के रख देती हूँ। मस्त भीग के तैयार हो जाता है, रोटी एकदम सॉफ्ट और मस्त नरम बन पूरा पूरा बनता है ना, एकदम सॉफ्ट रहता है रोटी। ऐसी आटा को पहले से भिगा के रख दोगे ना तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है रोटी। चटनी को बंद करती हूँ। मस्त से बन गया है ना, इसको साइड करती हूँ। खाना नहीं खाते हो क्या दीदी बताओ? खाती हूँ भाई, बना के खाऊंगी है ना। अभी तो खाना बना नहीं है, खाना नाश्ता हो गया है, खाना बनाऊंगी फिर सबको दूंगी है ना। सबको खाना वगैरह परोस लूंगी ना, फिर खाऊंगी मैं भी। और जितू भाई, मेरा लॉन्ग वीडियो आता है ना तो हाई फाइव का ऑप्शन आता है, हाइप किया करो है ना। हाइप वगैरह का ऑप्शन आता है मेरे लॉन्ग वीडियो में, तो हाइप वगैरह जरूर करना जितू भाई। देखने का समय नहीं रहता है ना तो थोड़ा सा प्ले करके हाइप जरूर कर दिया करो है ना, अगर समय नहीं रहता है तो। अच्छा हाँ, हाइप करने से ना वीडियो आगे बढ़ता है ना। तो आप मेरे वीडियो में ना हाइप का ऑप्शन अब आता है, तो हाइप जरूर करना, ठीक है। हेलो फ्रेंड, हेलो, स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अब चैनल मोनो हो जाएगा ना तो ऐड वैड भी देखना है नहीं भाई। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? जीतू भाई का फुल सपोर्ट रहता है मेरे लाइफ में है ना, पूरा सपोर्ट करते हैं जीतू भाई। हेलो फ्रेंड, हेलो, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे आप सभी को। ये मेरे लिए, ये मेरे जीजा जी के लिए बन रहा है। हाँ पहला रोटी तो गैया के लिए रहता है, उसके बाद बाकी रोटी बनकर तैयार हो जाएगा है ना। पहला रोटी इधर गैया वगैरह नहीं मिलता ना, इसलिए छोटा सा बनाती हूँ, क्योंकि रोटी ना कभी कभी सूख भी जाता है, पता है। डेली घर गैया वगैरह नहीं मिलता है, और गैया वगैरह रहती है ना आस पास, थोड़ा सा बड़ा बना के देती हूँ।
चलिए कलिंदर को भी अंदर रख देती हूँ फ्रिज में, है ना। फ्रिज में रखूंगी तभी ठीक रहेगा। थोड़ी देर अभी रखूंगी, थोड़ी देर बाद में। बेटू का भी दाल चावल बन गया है ना। अब बस रोटी ही बचा है, फिर मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। राधे राधे आप सभी को। तवा ज़्यादा गर्म हो गया ना तो रोटी थोड़ा सा जलने लग जाता है ना, इसलिए फूल नहीं रहा है। थोड़ा सा फ्लेम को लो करूँगी ना तब रोटी जो है फुलकर तैयार होगा, है ना। हेलो जी, हेलो। चलिए अर्पण करके मैं दे रही हूँ उनको खाना, तुलसी पत्ता डाल के। नहीं सच में होनी। ये है खाना। हेलो फ्रेंड, हेलो। हेलो जी, हेलो। अब फ्लेम को भी लो रखती हूँ क्योंकि तवा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ना। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। लाइव को लाइक करते जाइए फ्रेंड। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग।
ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई है ना। हाँ जीतू भाई, नहीं है कोई चिंता, इसीलिए तो आपको बताई मैं, है ना, क्योंकि हम लोग बोल भी उसको सकते हैं जिस जिनसे रहता कि है ना ये करेंगे करके, इसीलिए मैं तो आपको बस बोली है ना, और किसी को नहीं बोली, क्योंकि मेरे को पता है आप करोगे करके, इसीलिए ना मैं आपको बस बोली। मेरे को पता था कि आपका सपोर्ट पूरा रहता है मेरे को करके ना, इसीलिए मैं बोली। अब क्या है ना, मेरे लॉन्ग वीडियो में हाइप का ऑप्शन आना चालू हो गया, जैसे हाइप होता है ना तो वीडियो ना आगे बढ़ता है ना, और लोगों तक जाता है, इसीलिए मैं सोची आपको बता देती हूँ करके। और फिर कुछ दिन में ना, 2-4 दिन में मोनो भी हो जाएगा, फिर एड रिवेन्यू चालू हो जाएगा मेरा, है ना। अभी ऐड वाला नहीं, अभी मतलब ऐड आता है पर उससे इनकम नहीं होता है ना, अभी ऐड मेरा नॉर्मल ऐड है, जब मेरा मोनो हो जाएगा ना तब उससे इनकम आना स्टार्ट होगा, है ना। हाँ दीदी, हाँ भाई। संडे को ना सब लाइव करते हैं, पता है, इसलिए ज़्यादा लाइव में वो ऐड नहीं होता है, दोपहर का समय ज़्यादा हो रहता है, दोपहर में मैं नहीं आ पाती हूँ लाइव, क्योंकि इधर इधर ही समय हो जाता है, इसलिए आज सोच रही हूँ थोड़ा रखूँगी लाइव को लंबा, है ना, वॉइस ऑफ करके वीडियो ऑफ करके करके सोच रही हूँ, अब देखूँ क्या होता है आगे। हाँ ठीक बोला है दीदी। हाँ भाई। हाँ हाँ ला रही हूँ। गरम है बहुत। माँ का फोन चालू है? ओके बाय बाय भाई, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो जी, हेलो हेलो फ्रेंड, हेलो। अब गर्मी का दिन आ गया ना, आटा एकदम एकदम जल्दी सूखने लग जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो इसीलिए गीला कपड़ा ढक के रखोगे ना, तभी ठीक रहता है। खाना बना भी रही हूँ और साथ साथ ना दे भी रही हूँ मैं, है ना, दोनों काम चल रहा है मेरा। हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड आप सभी का लाइव में। हेलो जी, हेलो। ज़्यादा गर्म हो गया तवा है, फ्लेम को हेलो जी, हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। हेलो। गुड कुकिंग विद अंजू वर्मा। हेलो जी, हेलो, स्वागत है डियर आपका मेरे लाइव में। कैसे हैं आप? लाइव को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स? और हो गया आपका ब्रेकफास्ट? क्या बनाए थे? कहीं पे छेद हो जाता है ना, पूरा हवा वहीं से निकल जाता है। तेल में रोटी। हाँ हाँ, ला रही हूँ। हेलो हेलो जी, हेलो फ्रेंड।
हाँ बेटा, हाँ हाँ चल मैं आती हूँ, गरम चिंता, चल मैं आती हूँ, फोन के देखती हूँ। हाँ है ना, आटा लगा के दूँ? हाँ चलो उधर चलो। हाँ उधर रखो ना, मैं देती हूँ उधर। हाँ छोटा वाला देती हूँ, इधर गर्म है बहुत है ना, उधर ही रखो। हाँ ले वाला हाँ। हाँ बेटा उधर ही रखो ना, मैं देती हूँ। हाँ कटेगा फिर मैं नहीं आती। हाँ काट दिया, हाँ ले दे, चल जाओ। आटा कैसे पहनो, रोटी बना जल जाता है रोटी में, इधर जाता है उधर का जल जाता है फ्रेंड्स, क्या करूँ। हेलो जी हेलो। गर्मी के दिन में फ्रेंड्स हालत खराब हो जाती है रोटी बनाने में, है ना। हेलो जी हेलो हेलो फ्रेंड।
बहुत गर्मी है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रोटी बनाते बनाते तो हालत ख़राब हो गया है ना। गर्मी में इतना सारा रोटी, 1 डेढ़ घंटा हो गया मेरे को कुकिंग करते हुए, हालत ख़राब हो गई। आज है एकादशी, तो हमारे यहाँ सब खाते हैं रोटी रोटी, इसलिए आज रोटी और बहुत ज़्यादा बन रहा है। हाँ, आ रही हूँ। हेलो जी, हेलो। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमचूर भी ले आना, अमचूर पाउडर थोड़ा सा ही लाना, ज़्यादा मत लाना, बताना है ना। जंगल जल्दी ऊपर नहीं पता। पापा है करे हुए। चिपक गया फ्रेंड। चलिए, अब मेरा लास्ट रोटी हो गया है ना, बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे आप सभी को।
तो यहाँ पे बना है बेटे के लिए दाल और चावल, तो मस्त बन के तैयार हो गया। दाल थोड़ा सा चला गया चावल में। आज का मैं गुपचुप बना रही हूँ। खुद ही दरवाजा बंद हो रहा है, जाओ घर जाओ, मैं आती हूँ, चलो। हाँ नहीं नहीं नहीं, गिर जाएगा, मत कर आरुष। ये बब्बा ये कैसे करता है। हेलो जी, नहीं कर बेटा, जाओ उधर जाओ। अंधेला हो रहा है बेटा, खोलो दरवाजा को बेटा। चलो आपके लिए भट्टू बने ला, चलो बैठो, आपका भट्टू बन गया, चलो बैठो जल्दी, मैं लाती हूँ आपके लिए। चलो, धूप आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो जाओ, मैं आती हूँ, चलो। नहीं बंद करना बेटा, ले ले, अंधेला हो रहा है बेटा।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ टमाटर सॉस। तो आज का टमाटर सॉस जो है मैं हम लोग के लिए बनाने वाली हूँ, है ना। देख सकते हैं बहुत सारा टमाटर ली हूँ मैं, और ये सबका बनेगा सॉस, है ना। हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड आप सभी का मेरे लाइव में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ टमाटर सॉस, है ना। आज मैं बनाऊंगी बहुत सारा। आज मैं बनाऊंगी तीखा वाला, है ना। आज तीखा वाला सॉस बनेगा। उस दिन बना था बेटू के लिए मीठा वाला, है ना, बिना मिर्च वाला। आज बनेगा मिर्च वाला सॉस। ओ सॉरी सॉरी सॉरी।
हेलो जी, हेलो।
फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सभी का। छातले हेलो जी, हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। देख पहले मैं कहा कि ये अलमारी समझ रहा था, तब ध्यान नहीं से मन मन नहीं, मतलब वो अलमारी के एक संगे संग पीछे पीछे तान दिमाग नहीं है कहानी। तब फिर कि ऊपर दबाव वाली ध्यान झुका के देखे तो सच में ऊपर हां नीचे हां तब वो फिर गया तब लाए हो। ये लो अब तक इतनी पानी निकल के पूरा हेलो जी, हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से मैं बनाने वाली हूँ टमाटर सॉस। बहुत सारा है ना, टमाटर को धो करके तैयार कर रही हूँ मैं।
हेलो हेलो जी, स्वागत है आचार्य दिन बंधु जी आपका। थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका मेरे लाइफ में। राधे राधे जी, राधे राधे, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे लाइव में। चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दिन बंधु जी, आचार्य जी। तो आज मैं बना रही हूँ होममेड अपना टमाटर सॉस है ना, और साथ में कर रही हूँ लाई। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं? हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। राधे राधे जी, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल, बाल गोपाल परिवार आपके? हाँ जी, सब बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? कौन पूजा? हाँ। जी, मैं हूँ छत्तीसगढ़ बेमेतरा से। आप कहाँ से हैं? आपका शुभ नाम क्या है? दाम्पत्य जीवन सभी कुशल मंगल व्यतीत हो रहा है। हाँ जी, सब बढ़िया है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का मेरे लाइव में। जी, हम तो उड़ीसा कई बार आ चुके हैं ना भगवान जी का दर्शन करने। ले जा, चावल का दीजिए।
जी जरूर जरूर देती हूँ। हाँ बेटा मैं दे रही हूँ, चलो जाओ बैठो घर। बाल धोए सब मत ठंडा होके। हेलो जी हेलो। जरूर आएंगे, और कभी अवसर मिला भगवान जी हमें बुलाएंगे जगन्नाथ तो जरूर आएंगे, है ना। वैसे तो जाने का है, पता नहीं कब हो रहा है जाना, भगवान कब बुला रहे हैं अपने दरबार में, तो जाने का है जगन्नाथ मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान के बुलावा के बिना तो जा भी नहीं सकते, है ना। जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। बाल गोपाल कितने हैं आपके वहाँ, सारे जी क्या करते हैं। जी मेरे एक बाल गोपाल है, एक है। नहीं जी नहीं, मेरा तो लाइव अभी बहुत दिन के बाद स्टार्ट हुआ है ना, बीच में बंद था। अभी तो मेरा चैनल भी स्टार्टिंग है।
हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे।
हेलो अर्पित भाई, ये क्या कर रही है? मैं टमाटर सॉस बना रही हूँ अर्पित भाई, तो उसी का वीडियो शूट कर रही हूँ। टमाटर सॉस बना रही हूँ अभी, है ना, तो उसी का वीडियो शूट कर रही हूँ। राधे 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 राधे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग टमाटर को ना ऐसे डालेंगे, बिना पानी वगैरह डाले इसको ऐसे उबालना है ना। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर में पानी रहेगा, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही पकाना है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं बहुत सारा टमाटर का बना रही हूँ, इसलिए मैं अभी टमाटर को उबाल रही हूँ। फिर साथ में जितना भी मैं मसाला दिखाई हूँ ना, सबको डाल के उबालना है ना। हेलो अर्पित भाई, नाइस, थैंक यू। हाँ बेटा। हेलो जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का लाइव में। और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, है ना, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। क्या है बेटा? क्या है? मैं सॉस बना रही हूँ बेटा, चलो जाओ उधर। ये बेटू परेशान करने लग जाता है फ्रेंड्स, क्या करेंगे। नाइस, थैंक यू सो मच। खत्म होगा फिर आएगा ना बेटा। सब्जी है वो, सब्जी।
हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। चिपके ना करके बार बार हिलाती हूँ ताकि ना नीचे तली में चिपके ना टमाटर करके। पैर बहुत दर्द करने लग गया फैन से ना, खड़े खड़े, तो मैं नीचे बैठ के काट रही हूँ। आप लोग बने रहिए लाइव में और बताइए कैसे हैं आप लोग। मैं थोड़ा से नीचे बैठ के ना काम कर रही हूँ। पैर बहुत दुख गया खड़े खड़े, बहुत टाइम से खड़ी हूँ, है ना। तो इधर बाकी का तैयारी कर लेती हूँ सॉस के लिए।
हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। थोड़ा सा बचा चिकन ना, इसको ना अलग से बॉईल करूँगी। साथ में बॉईल करती ना तो टमाटर जल्दी बॉईल हो जाता है और चुकंदर थोड़ा लेट से होता है ना, तो अच्छे से पकता नहीं है चुकंदर। तो इसको ना अलग से पूरा को एक साथ अलग से बॉईल करूँगी, है ना। इसको पूरा ना एक साथ एक कुकर में बॉईल करूँगी सभी मसाला को, और ना अलग से ग्राइंड करूँगी, क्योंकि टमाटर के साथ ना बच जाता है सब। थोड़ा हार्ड होता है ना, टमाटर जल्दी बॉईल हो जाता है, तो अलग से उबालूँगी। इसलिए टमाटर को पहले उबाल रही हूँ ताकि वो सब ठंडा होके रहे। फिर इसको तो ठंडा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि टमाटर को ग्राइंड करना है तो ठंडा करने में थोड़ा सा समय लगता है। और टमाटर काट लेती हूँ, एक कुकर का खाली होगा ना, फिर उसको उबालने के लिए रखूँगी। और टमाटर सॉस के लिए ना स्टील का ही बर्तन का या फिर कांच का बर्तन का ही उपयोग करना है, और उबालने के लिए तो स्टील का ही उपयोग करना है। अगर स्टील का कुकर नहीं है ना तो गंजी वगैरह में बॉईल करें, लेकिन स्टील में ही करना है ना, एल्युमिनियम का कुकर का उपयोग नहीं करना है। चलो जी, हेलो। तो चलिए इसको भी बंद करती हूँ। दोनों कुकर का टमाटर जो है बॉईल हो गया है। अब जल्दी से और काटती हूँ बाकी टमाटर को डालती हूँ बॉईल करने के लिए। चुकंदर को मैं अच्छे से धो करके रख ली थी। टमाटर अच्छे से उबल गए हैं, तो इसको मैं खाली कर लेती हूँ। देख सकते हैं टमाटर मस्त बॉईल हो गए हैं, है ना। इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, टमाटर मस्त बॉईल हो गया है। इधर एक कुकर में और बॉईल की हूँ, ये भी बॉईल हो गया। चलिए इसको मैं ट्रांसफर करती हूँ दूसरे बर्तन में। तो इसको डालती हूँ इसमें, और बचा हुआ टमाटर को रखती हूँ बॉईल करने के लिए, है ना। इसको ठंडा होने के बाद ही तो ग्राइंड करेंगे, है ना, नहीं तो फिर जार से बाहर आ जाएगा अगर ठंडा नहीं हुआ रहेगा ना।
और ग्राइंड करोगे ना तो पूरा जार से बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसको ठंडा करना पड़ेगा। हाँ बेटा, गरम है बेटा, गरम है, टॉटो गरम है। जब दादा क्या कर रहे थे, क्या बता। आरुष नहीं बेटा, प्लीज। आरुष नहीं ना बेटा, जा ना।
आगे के टमाटर भी बॉइल कर रही हूँ। बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बनाना। बनाना तो अभी खाया बेटा, दही दे दूँ? चलो दही देती हूँ। चलो बेटा आपका दही तैयार है, चलो खाओ। हेलो जी हेलो। चलो दही चाहिए था ना आपको? और बनाना भी नहीं, एक साथ नहीं खाते बेटा। बनाना को थोड़ा दही खाने के बाद खाना ना, उसको रख दो, चीटी आ जाएगा। रख दो बनाना को, दही को फिनिश कर लेना फिर खाना, ठीक है? चलो जाओ। कहाँ पे खाएगा? गिराना नहीं, नीचे है नीचे खाना, नीचे बिस्तर में गिर जाएगा, नीचे बैठ खाना। चलो बैठ में नीचे खाएगा, तब बाद में चलेगा होगा, नहीं बैठ खाएगा। नहीं है क्या? चल इधर आके खाइए। मिल गया? हेलो हेलो हेलो। तो चलिए फ्रेंड्स, तो टमाटर बॉइल हो गए हैं, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, है ना? और जो बचा हुआ टमाटर है ना, उसको मैं काट लेती हूँ बॉइल करने के लिए। और फिर तैयार करूँगी प्याज लहसुन अदरक का भी छिलका निकालना है। चुकंदर का प्याज मैं निकाल ली हूँ, इसका निकालना बचा है अभी फ्रेंड्स, है ना? तो पहले बचा हुआ टमाटर मैं जल्दी से काट लेती हूँ, फिर निकालूंगी बाकी का छिलका वगैरह और तैयारी करूँगी सॉस का आगे प्रोसेस का, है ना फ्रेंड्स? तो चलो जल्दी जल्दी काट लेती हूँ और इसको काट के इसमें डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए, है ना?
चलिए उसको रखती हूँ बॉईल करने के लिए। डाल देती हूँ फिर से नमक। अब बाकी का जो भी टमाटर रहेगा ना उसको इसमें डालूंगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। एनर्जी
थोड़ा देर इंडक्शन को भी ठंडा होने देती हूँ, बहुत गर्म हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अदरक और प्याज लहसुन वगैरह का भी तैयारी कर लेती हूँ, है ना। छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेती हूँ जल्दी से, और फिर इसको भी बॉईल करने के लिए रखना है बाकी टमाटर के साथ। तो जल्दी जल्दी इसको भी काट लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको ना अलग से बॉईल करूँ, क्योंकि टमाटर जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और ये सब है ना थोड़ा सा हार्ड होता है ना फ्रेंड्स। तो अच्छे से बॉईल नहीं हो पाता है, तो सोच रही हूँ कि इसको अलग से बॉईल कर दूँ एक साथ सबको, प्याज लहसुन अदरक और चुकंदर को ना एक साथ बॉईल कर दूँ, ऐसा सोच रही हूँ, है ना। और जितना भी मसाला लूँगी ना उसको फिर इसको अलग से ग्राइंड कर दूँगी, है ना। तो चलिए पूरा इसका तैयारी कर लेते हैं, काट के अच्छे से तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो अदरक तो कट गया है, चुकंदर को भी काट लेती हूँ जल्दी से। तो इसको ना पतला पतला ऐसे पतला पतला कट कर लेती हूँ। पतला पतला कट करेंगे ना तो अच्छे से जल्दी बॉईल होगा और अच्छे से ग्राइंड भी होगा, है ना। इसीलिए इसको पतला पतला ही कट करेंगे, है ना। क्योंकि चुकंदर जल्दी बॉईल नहीं होता, जैसे प्याज है टमाटर है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बट चुकंदर को थोड़ा सा समय लगता है ना बीटरूट को। तो इसको मैं पतला पतला कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही कट करके सभी चुकंदर को तैयार कर लेती हूँ, है ना। चलिए टमाटर को रखती हूँ बॉईल करने के लिए इसको।
फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ना पूरा तैयार हो गया है मेरा चुकंदर और अदरक। अब यहाँ पे मैं तैयार करूँगी प्याज को, है ना। तो प्याज को भी अच्छे से कट करके तैयार कर लेते हैं और लहसुन का भी छिलका निकालूंगी फिर, है ना। तो जल्दी से इसको भी तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करेंगे अच्छे से बॉयल होके ग्राइंड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही सभी प्याज और लहसुन को तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे आप सभी को। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से बना रही हूँ अपने घर के लिए टमाटर सॉस, है ना। तो भी मैं नीचे तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड, गैस करके सब मसाला का, क्योंकि खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया है ना, तो मैं बैठ के तैयारी कर रही हूँ। हेलो जी, हेलो सीमा सिंह, अच्छा जी सीमा, हेलो जी, कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे लाइव में डियर। क्या कर रहे हैं जी? तो मैं बना रही हूँ आज टमाटर सॉस, है ना। तो इसका लाइव कुकिंग मेरा हो चुका है, अभी मैं अपने व्लॉग के लिए बना रही हूँ और घर के लिए तो बनाना ही था करके इसका शूट कर रही हूँ, है ना। और कैसे हैं आप? राधे राधे, कमेंट करिए डियर, लाइव में है तो। अच्छा अच्छा जी, कैसे हैं सीमा जी? आप कहाँ से हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा डियर, कहाँ से हैं। तो मैं ना बहुत सारा सॉस बना रही हूँ, है ना, घर के लिए। मैं ऐसे ही बना करके यूज़ करती हूँ सॉस, है ना फ्रेंड्स। यूके, अच्छा जी, यूके मीन्स उत्तराखंड। यूके यूनाइटेड किंगडम की उत्तराखंड। यूके मीन्स दो मीनिंग निकलता है, क्या बोलते हैं सीमा जी? उत्तराखंड से हैं क्या? उत्तराखंड से ना मेरे बहुत से फ्रेंड लोग आते हैं ना, उत्तराखंड से। हेलो जी, हेलो। उत्तराखंड, कश्मीर और ये राजस्थान, जैसलमेर, इधर से ना बहुत लोग लाइव में जुड़ते थे पहले, जब मेरा लाइव कंटिन्यू था ना, तब उन लोग जुड़ते थे डियर, है ना। और बताइए आप कैसे हैं? जी, तो टमाटर को ना मैं खाली कर लेती हूँ। और बताइए आप कैसे हैं? वॉच टाइम पूरा हो गया आपका?
नहीं डियर, मेरा वॉच टाइम बचा है इसीलिए तो लाइव चल रहा है। आज मेरा कंटिन्यू है ना, लंबा चल रहा है। आज मेरा लाइव ना अभी 5 घंटा होने वाला है, पता है। मैं सुबह से लाइव ऑन की हूँ, जब मैं लंच बना रही थी ना तब से लाइव ऑन की हूँ। तभी लाइव को ना मैं बंद ही नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे को अपना घर के लिए टमाटर सॉस भी बनाना था ना। तो मैं सोची लाइव को कंटिन्यू रखती हूँ, आज संडे है करके। तो अभी मैं लाइव को ना बंद ही नहीं की हूँ, है ना। और आज पहली बार मेरा लाइव इतना लंबा चला है। बस थोड़ा सा ही बचा है, पर मेरा लाइव टाइम जल्दी से होने वाला है पूरा। और बताइए आप कैसे हैं डियर। लाइव को लाइक कर लीजिए जी, लाइव को लाइक कर लीजिए। स्क्रीन डबल क्लिक करके लाइव को लाइक जरूर करिए आप लोग। हेलो जी, हेलो। कैसे पता चलता है कितना बचा है? हाँ डियर, वो वाईटी स्टूडियो में पता चलता है ना। आप मेरा ना वीडियो देखिएगा एक बार, है ना। कौन सा वीडियो देखे ना, आप मेरे लॉन्ग वीडियो में देखना। 2 माह में हाफ मोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन वाला मेरा वीडियो है ना, उसमें आपको पूरा डिटेल बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। और उसमें आप कमेंट कर देना आप देखे हैं कि नहीं, ऐसे में मेरे को समझ में आएगा कि आप देखे हैं कि नहीं करके, है ना। आप उसको अच्छे से देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज मेरा सीजी है, मतलब छत्तीसगढ़ी है। पर उसमें जो दिखाया गया है ना, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि कैसे पता करना है ना। उसमें मैं दिखाई हूँ कि पता कैसे करते हैं। तो आप ना देखना मेरे लॉन्ग वीडियो में, अच्छे से चेक करना। उसमें लिखा होगा, है ना, मात्र 2 महीने में मोनेटाइजेशन ऑन, है ना। लाइव में है तो कमेंट जरूर करिए। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ डियर। अब मेरा ना वीडियो देखना वाला है ना, उसमें पूरा मैं डिटेल में बताई हूँ कि कैसे पता करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और मेरा तो 2 महीने में ही हाफ मोनेटाइजेशन हो गया था। बस मेरा सब्सक्राइबर के चलते हुआ था। मेरा सब्सक्राइबर जो हुए 4-5 दिन हो गया है ना। पर मेरा वॉच टाइम, मैं क्या है अभी बहुत दिन तक लाइव नहीं कर पा रही थी ठीक से, तो मेरा वॉच टाइम ना थोड़ा से बचा है ना। नहीं तो अब तक मेरा वॉच टाइम हो भी जा रहा था। मैं अभी कुछ दिनों से कंटिन्यू लाइव नहीं कर पा रही थी, है ना। अब मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो वॉच टाइम नहीं हुआ डियर, है ना। नहीं तो अभी तक तो मेरा फुल मोनो भी हो जा रहा था। समझे आप सीमा जी? कहाँ देखना है आपको, समझ में आ गया ना। लॉन्ग वीडियो में देखना आप मेरे, है ना। उसमें पूरा क्लियर आपको पता चल जाएगा कि कैसे पता करते हैं, है ना डियर। आप उसमें सब चीज़ देख सकते हो अपना, है ना, कि आपका कौन सा वीडियो कितना व्यू गया है। क्योंकि हमारा जो यूट्यूब में दिखता है ना वो ओरिजिनल नहीं रहता है ना। सारा चीज़ जो अपडेटेड होता है ना, हमको वाईटी स्टूडियो में दिखता है ना। तो आप एक बार मेरा वीडियो देख लो, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डाला हुआ है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, है ना। वहाँ मैं आपको बता दूँगी क्या है कैसा है। तो आप मेरे चैनल में देखना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लेना और वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी, है ना। ठीक है सीमा जी, समझ आया होगा तो कमेंट जरूर करिए ओके करके। हेलो
हेलो जी, हेलो फ्रेंड, हेलो। खड़े खड़े पैर दुख रहे फ्रेंड्स, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे बैठ गई हूँ। लहसुन का छिलका निकालना है ना, तो बहुत टाइम हो गया मेरे को खड़े खड़े। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, है ना सीमा जी। आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। हाँ, देखा था टीवी से सीधे नहीं खींचनी। हेलो जी, हेलो। हेलो किचन गॉडेज। मैं बना रही हूँ डियर सॉस, है ना, टमाटर सॉस बना रही हूँ घर पर ही। और बताइए आप कैसे हैं? मैं बना रही हूँ टमाटर सॉस डियर। और आप बताइए आप कैसे हैं?
हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे आप सभी को फ्रेंड। लाइव को लाइक कर लीजिए जितने भी लोग लाइव में हैं। हेलो सीमा जी, देख लिया वीडियो, अच्छा लगा, थैंक यू डियर, थैंक यू। आपको समझ में आया कि नहीं डियर? पता चला ना आपको? कैसे पता चलता है? हेलो सबीना खान जी, हेलो डियर, हेलो, कैसे हैं आप? हाँ जी। हाँ तो अब वैसे ही चेक करना डियर, है ना अपना, क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ सबीना जी, देखिए टमाटर का सॉस, है ना। तो उसी के लिए चल रहा है पूरा तैयारी, देख सकते हैं पूरा बीट रूट प्याज वगैरह लहसुन अदरक, और ये है सब मसाला, है ना। और ये है विनेगर। आज इसका ब्लॉग आएगा, है ना, ब्लॉग शूट कर रही हूँ इसीलिए ना, आज लंबा लाइव चल रहा है। मैं सोची आखिर बना ही रही हूँ तो चलिए लाइव भी करती हूँ, और मेरा ब्लॉग भी बनेगा ऐसे करके ना, आज मैं कर रही हूँ, है ना। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हाय, हेलो नीलम जी, फर्स्ट टाइम मेरे लाइव में आप आए हैं आज, स्वागत है आपका। और बताइए आप कैसे हैं? डीपी दो फोन होगा ना आपके पास? हाँ डियर, दो फोन है ना मेरे पास, एक फोन में लाइव चल रहा है, एक में भी शूट शूट करूँगी इसके, इसीलिए आप बना सकते हैं। हाँ डियर, हाँ हाँ, पर मेरा लाइव चलता है ना, तो लाइव नहीं कर, जैसे कल मैं लाइव बिल्कुल भी नहीं आई थी, है ना। तो कल लाइव नहीं आई थी तो कल मैं डेली व्लॉग शूट कर रही थी अपना। मुझे भी खाना है, आइए आइए नीलम जी, आइए, आपको जरूर खिलाते हैं, है ना। होममेड सॉस बना रही, देख सकते हैं। मैं ना पहले टमाटर को बॉईल करके रख रही हूँ, क्योंकि टमाटर को ठंडा होने में समय लगता है ना, तो इसीलिए देख सकते हैं इतना सारा ये है, और इधर ये है, और है ना, तो पूरा को बॉईल करके रख ली हूँ अच्छे से। अभी मैं मसाला वगैरह तैयार कर रही हूँ, मसाला को लास्ट में बॉईल करूँगी करके। आपका फुल मोनो है क्या, हाफ मोनो है? मेरा अभी हाफ मोनो है, जस्ट फुल मोनो होने वाला है, अभी नहीं हुआ है ना। अभी हाफ मोनो है, फुल मोनो मोनो होने के लिए ना बस 100 घंटा बचा है फ्रेंड्स, है ना। फुल मोनो होने के लिए 100 घंटा बचा है, हो जाएगा वो भी, वॉच टाइम बस बचा है, बाकी सब्सक्राइबर तो मेरा हो गया है ना। फुल मोनो के लिए 100 घंटा बचा है। हेलो जी, हेलो फ्रेंड, हेलो, स्वागत है सभी का। मुझे भी खाना है, ओके ओके ओके। तो मेरे को व्लॉग बनाना रहता है तो मैं लाइव नहीं आती हूँ डियर, है ना। पर ऐसा है कि सॉस बना रही हूँ और सुबह से मेरा लाइव चल रहा है, तो इस वाले फ़ोन में आज लाइव आई हूँ ना, तो उसमें बना रही हूँ व्लॉग, है ना। बाकी मैं तो लाइव बहुत कम आती हूँ, सबीना जी आप तो देखे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू दी, थैंक यू। और आपका खाना वगैरह हो गया? आपका खाना वगैरह हो गया डियर? आज ना मैं सुबह से लगी हूँ, सॉस को बनाना है करके, टमाटर को ले आए थे ना, तो इसको बनाकर कंप्लीट करना है करके ना, मैं आज इसमें लगी हूँ, है ना। और मैं सोची चलिए बना ही रही हूँ तो लाइव भी कर लेती हूँ, और साथ ही साथ ब्लॉग भी बना लेती हूँ करके। वैसे तो इसका लाइव कुकिंग कर ली हूँ, बाकी आज लाइव कुकिंग नहीं कर रही हूँ, लाइव बातें कर रही हूँ और साथ साथ अपना काम कर रही हूँ, है ना। सॉस वाला लाइव कुकिंग उस दिन था, उस दिन सारा प्रोसेस दिखाई हूँ। आज मैं प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ, बस बात कर रही हूँ आप लोग के साथ, है ना। आपने एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है? मैं बहुत सारा लॉन्ग वीडियो डाली हूँ जी, आप मेरे चैनल पे देखिए नीलम जी, आप मेरे चैनल पे देखिए, मैंने बहुत सारा लॉन्ग वीडियो डाली है। आपने एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है? बहुत सारा डाली हूँ डियर, आप देखना, है ना।
मेरा तो डेली कल ही लॉन्ग वीडियो डाला है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक दिन के गैप में ना देखती हूँ। हाँ देखिए ना, आप बहुत सारा लॉन्ग वीडियो डाली हूँ प्लीज़, और कमेंट भी कर देना, और हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप भी कर देना डियर, है ना। इधर लाती हूँ, यहाँ बात करने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग से बात करती हूँ ऐसे, और काम भी करती हूँ। आपका तो लाइव ही सारा है। नहीं नहीं, आप वीडियो पे जाइए ना, वीडियो पे मेरा प्ले लिस्ट देखिए, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा। मेरा तो बहुत सारा वीडियो है डियर। मेरा कुकिंग का वीडियो है, मेरा व्लॉग वीडियो है, मेरा गांव वाला कुकिंग है। आप देखिए ना, बहुत सारा वीडियो है। आप प्ले लिस्ट में देखिए, कितना अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हूँ सबका, है ना। आपको वहाँ पे वीडियो नहीं दिख रहा होगा ना, तो आप प्ले लिस्ट देखिए। प्ले लिस्ट में मेरा सारा चीज़ अलग अलग डिवाइड है ना। बेटू, आपको नींद नहीं आई है ना, सो जाना बेटा जा। मेरा बच्चा भी मेरा वेट कर रहा है बेचारा कि हाँ देखी, देखे जी कैसा लगा, कमेंट करना था ना। आप कमेंट किए हो कि नहीं। छिपा हुआ था, कैसे छिप गया डियर। मैं तो पूरा प्ले लिस्ट बनाई हूँ और वीडियो में है, कैसे छिपा हुआ है पता नहीं। मैं तो वीडियो वगैरह पूरा बनाई हूँ, कैसे छिपा हुआ है यार। नहीं दिखता क्या लोगों को, लोगों को नहीं दिखता क्या, जैसे सामने वाले को। बाद में करती हूँ, ओके ओके ओके। और बताइए आप। देखूंगी तो फुल वॉच करूंगी, ओके डियर, ओके ओके ओके। फुल वॉच करना। बहुत सा ना मेरा सीजी लैंग्वेज में है ना, मेरा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में है, और कुछ कुछ वीडियो ना मेरा अपना हिंदी में है ना। मतलब मैं लोकल व्लॉग, लोकल लैंग्वेज में भी कुछ कुछ व्लॉग बनाती हूँ, है ना। तो आपको छत्तीसगढ़ी समझ में आएगा कि नहीं। वैसे हमारा छत्तीसगढ़ी लगभग हिंदी से मिलता जुलता रहता है वैसे, है ना। ओके जी ओके। और आपका हो गया लंच वगैरह डियर, लंच वगैरह कर लिए। और मेरा सारा वीडियो आप देखना, है ना, वर्टिकल ही है। हॉरिजॉन्टल तो अभी मैं की ही नहीं हूँ, एक आध ही की हूँ, अभी बना रही हूँ। ओके जी, क्या बना रहे हो आप अभी, क्या बना रहे हैं लंच में।
मैगी? क्या दी मैगी? मैगी मैगी खा के रहोगे क्या आप? और कुछ खाए हैं? सुबह क्या खाए हैं? अभी मैगी बना रहे हैं आप? सुबह रोटी सब्जी खाए होंगे तब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। पानी पीना है बेटा? आपका गिलास मैं देती हूँ, रुको 1 मिनट, है ना आपको पानी? चलो पानी। कुछ नहीं खाना आज। क्यों? क्यों नहीं खाना है आपको? आज तो एकादशी है, हम लोग क्या है ना, रोटी रोटी ही बनता है एकादशी के दिन। और क्या बोलते हैं, रोटी ही खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, है ना, एकादशी के दिन हम लोग। और बताइए आप। मेरा भी कल प्रदोष का उपवास रहेगा। अच्छा जी ठीक, प्रदोष व्रत है ना? हाँ। बहुत सारा सॉस बना रही हूँ, इसीलिए ना बहुत समय लग रहा है। अब एक ही बार में बनाऊंगी, बार बार करने से अच्छा है एक ही बार करती हूँ करके ना, एक ही बार में बना रही हूँ, है ना। तो देख सकते हैं इतना सारा मेरा मसाला जो है तैयार हो गया है ना। और अभी इसको बॉईल करने के लिए रखूंगी टमाटर के साथ में। और बताइए जी आप, वीडियो को बताना है ना कैसा बना है। और आपका कितना बच्चा है, क्या बोलते हैं नीलम जी, आपका वॉच टाइम कितना बच्चा है अभी और कंप्लीट होने के लिए? क्या बना रही हो? मैं टमाटर सॉस बना रही हूँ डियर, है ना। होममेड टमाटर सॉस है। अभी एक दिन लाइव की थी टमाटर सॉस का, उसमें मैं मिर्ची का यूज़ नहीं की थी, है ना। उसको मैं अपने बेटू के लिए बनाई थी। और आज मैं बना रही हूँ जिसमें ज़्यादा मसाला वगैरह का यूज़ करके हम लोग के लिए बना रही हूँ, बड़े लोग के लिए। और उस दिन जो लाइव की थी ना वो बच्चे के लिए, बच्चों के लिए था, है ना। तो उस दिन मैं लाइव की थी टमाटर सॉस का। और आज भी बना रही हूँ, पर आज लाइव नहीं कर रही हूँ, आज मेरा ऐसे नॉर्मल बातचीत वाला लाइव है ना। और क्या बोलते हैं, आपका कितना बच्चा वॉच टाइम कमेंट करके बताना, है ना। आपका वॉश टाइम कितना बचा है दीदी, आपका वॉश टाइम? ठीक है, अगर बताने में प्रॉब्लम होगा तो नहीं बताना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, सारा चीज़ पब्लिक करना भी सही नहीं है। अगर आपको बताने की इच्छा होगा तो बताना, मैं तो बता देती हूँ, वैसे कुछ रहता नहीं है। हाँ बेटा अभी ब्रेक आया है ना, चलो मैं आती हूँ, चलो चलो मैं आ रही हूँ, अब चलो मैं आती हूँ ना बेटा, चलो चलो उधर चलो, गर्मी है यहाँ पे बहुत गर्मी, चलो। हाँ हाँ ठीक है।
क्या कर रहा है बेटा? हाँ तो अभी ब्रेक आया है ना उसमें। चलो मैं आती हूँ, चलो। मैं अभी 10-15 दिन में हाफ मोनो करवाऊंगी। ओके डियर, ओके, ठीक ठीक, समझ गई। चलो। अभी अभी उसमें ब्रेक आया है ना बेटा, उसमें ब्रेक चलिए को थोड़ा खाना भी बच्चा के खा तो थोड़ा चटाई में गिरा दिया है, सुपर भी लगा है कि सुपर भी मतलब ब्रेक आया है इसमें। चल बैठ के अपना दही कंप्लीट करो, थोड़ा दही कंप्लीट करो, मम्मा आ रही चलो। हाँ जी। ओके। ओके डियर, ओके। 10-15 दिन में हाफ मोनो। ठीक है, हो जाएगा, अच्छा है ना। बाकी का चीज़ें भी बॉईल करने के लिए रखती हूँ। कितना दिन में हो जाता है मोनो? डियर, मोनो होने के लिए दिन जो नहीं बता सकते हैं ना, मतलब आपका पर डे कितना आपको वॉच टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे मेरा मतलब 4-5 दिन पहले समझ में आ जाता है कि मेरा इतना दिन में मोनो होगा, क्योंकि यूट्यूब का आप तो जानते ही हैं ना, 4-5 दिन में मतलब 3-4 दिन में अपडेट होता है शायद तक, है ना, 3 से 4 दिन लगता है अपडेट होने में। तो आप अपना चेक करके वहाँ से देख सकते हैं कि मेरा कितने दिन में मोनो हो जाएगा, है ना। तो आप वहाँ से आपको 5 दिन पहले ना, 3 से 4 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा मोनो होने वाला है करके, क्योंकि अपडेट होते जाता है। तो आप अपना डेली का देख सकते हैं, है ना, लेकिन अपडेट होने में तो समय लगता है 3 से 4 दिन। डेली का अपडेट तो हमको मिल जाता है, पर जो मेन अपडेट जहाँ पे जो वैलिडिटी वाला रहता है ना, जहाँ पे कंप्लीट करना रहता है वैलिड वॉच टाइम, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत माइनस होता है वॉच टाइम, जैसे हमारा जो दिखाता है ना पर डे इतना वॉच टाइम हमको मिला है करके, पर जो ऐड होता है उसमें शॉर्ट्स का नहीं ऐड होता है, तो कितना शॉर्ट्स का है वो अलग से माइनस हो जाता है। जब वैलिड वाला अपडेट होता है ना, तो वहाँ पता चल जाता है कि हमको कितना मिला है करके, है ना। तो वही है, आप डेली अपडेट अपना देखते रहिए, 4 से 5 दिन में आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि अब मेरा मोनो होने वाला है करके, है ना। हाँ। आपको वाईटी स्टूडियो से चेक करने आता है कि नहीं नीलम जी? आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना, है ना। अगर नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, मेरे चैनल में डला हुआ है, उससे आपको ना पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे चेक करते हैं करके। आप एक बार बताना, है ना, आपको वहाँ से देखना आता है कि नहीं। बहुत लोग अभी जैसे सीमा जी आई थी तो वो मेरे को पूछ रही थी, है ना, जस्ट आपके ऊपर ही आई रही होगी सीमा करके, तो वो सीमा जी मुझे पूछ रही थी कि वॉच टाइम कैसे देखते हैं, कैसे पता चलते हैं, पता करते हैं कि कितना हुआ है क्या हुआ है करके, है ना। तो आप एक बार ज़रूर मेरा लॉन्ग वीडियो देखिएगा, उसमें ना है कि मात्र 2 महीने में मोनेटाइजेशन ऐसा करके, तो वहाँ पे ना आपको उसमें समझ में आ जाएगा कैसे चेक करते हैं करके, है ना। तो आप ज़रूर चेक करिएगा। एक बार आप कमेंट करिए लाइव में, है ना, कि आपको मतलब चेक करने आता है कि नहीं, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। ओके डियर, ओके ओके, बताना आप। इधर चल रहा है व्लॉग का शूटिंग, है। तो फ्रेंड्स, अब मैं सभी मसाला को बॉईल करने वाली हूँ, है ना, क्योंकि टमाटर के साथ बॉईल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट से बॉईल होता है ना, चुकंदर जो है लेट से बॉईल होता है, इसलिए ना इसको मैं
अलग से इसमें बॉईल कर रही हूँ। हाँ बेटा आएगा ना, चलो मैं दिखाती हूँ। चलो कितना टाइम है बच्चा, मैं दिखाती हूँ। चलो मत ना बेटा, चलो डाइट कंप्लीट करो ना, तभी तो आएगा। हेलो जी, हेलो हेलो फ्रेंड। और बताइए डियर कुछ अपना। तो चलिए जल्दी से इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ यहाँ पास, और आप लोग को दिखाती हूँ टमाटर कितना बॉईल हो गया है ना। तो देख सकते हैं बहुत सारा टमाटर है, जो बच्चा और टमाटर है ना उसको भी डालती हूँ यहाँ ठंडा करने के लिए। और तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ है ना यहाँ पे टमाटर को। देख सकते हैं इतना सारा टमाटर जो है मेरा बॉयल होकर के रखा है फ्रेंड्स, है ना। तो देख सकते हैं बहुत सारा टमाटर सॉस मैं बनाने वाली हूँ। तो इसको ना ठंडा करने के लिए हम लोग कम से कम आधा से 1 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा भी रेस्ट नहीं की हूँ डियर, है ना। सुबह से आज मेरा चल रहा है इसी का सॉस वगैरह बनाना है, करना सुबह से मेरा चल रहा है काम। अब इसको ठंडा होने के लिए ना रखती हूँ 1 आध 1.5 घंटा, जब तक अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर इसका मैं बनाऊंगी सॉस, है ना।
पूरा को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। हेलो अर्पित भाई, राधे राधे अर्पित भाई। अर्पित भाई मेरा चल ही रहा है लाइव अभी तक, है ना। अब बंद करूँगी क्योंकि अब मेरा सॉस वाला काम हो गया है ना। अब थोड़ा सा जाके रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर मेरे को अपना व्लॉग भी एडिट करना है ना। आज का मेरा व्लॉग डालने का था, संडे को डालूँगी। ऐसे करके कल पूरा शूट की हूँ और आज इसका प्लानिंग हो गया, तो व्लॉग को अभी तक मैं एडिट भी नहीं की हूँ, तो पता नहीं अपलोड भी कर पाऊँगी कि नहीं, आज देखती हूँ। हाँ आता है, वाईटी चेक करना। अच्छा जी, ठीक है। ओके डियर, ओके। कचरा इकट्ठा हो गया है, इसको पूरा हटाती हूँ यहाँ पास। नहीं डियर, अभी मेरे को नहीं आता है ना, अभी तो मेरा हाफ ही मोनो है, तो अभी नहीं आता है। जब फुल हो जाएगा तो थोड़ा बहुत ऐड से आएगा, है ना। अभी तो मेरा नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फुल होने के बाद होगा।
अब इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, है ना। मोबाइल में ना थोड़ा सा चार्ज का प्रॉब्लम है, इधर लगाती हूँ चार्ज पे और करती हूँ लाइव को कंटिन्यू, है ना। जब तक मेरा मसाला बॉईल हो रहा है मेरे को तो अभी रहना ही पड़ेगा किचन में, तो इधर चार्ज में लगा देती हूँ और करती हूँ बातें, है ना। हेलो, हेलो ममता पटेल, हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। कैसे हैं आप? राधे राधे जी। कहाँ से हैं ममता जी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, है ना। और लाइव को लाइक कर लीजिए। कहाँ से हैं आप जी? आपका डीपी देख के समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ बेटा, कहाँ से हैं आप? हेलो जी। आप बेमेतरा से ही हैं क्या? क्योंकि नाम से समझ में नहीं आता है डियर, है ना, इसलिए बताइएगा कहाँ से है ना। बेमेतरा से है करके बोलेंगे ना, समझ जाऊंगी मैं। हाँ बेटा, आपको पानी पीना है बेटा? गिलास कहाँ है आपका? फिनिश कर लिए अपना दही? नहीं बच्चा। लाइव को लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स। दिखा मुंह कर देती, चलो चलो आपको सुलाऊंगी बेटा, दिखाना पहुंचने देना, पूरा दही है मुंह में। चलो जाओ। हेलो जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे आप सभी को फ्रेंड।
हेलो हेलो फ्रेंड, हेलो, स्वागत है जी सभी का लाइव में। हेलो। हाफ मोनो से क्या होता है? हाफ मोनो से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे, मतलब आपका चैनल को थोड़ा सा अच्छा मतलब वो मिलता है कि हाँ इनका चैनल जो है हाफ मोनो हो गया है ना, थोड़ा सा मतलब इम्प्रेशन बढ़ता है। बाकी हाफ मोनो से ना आपको वही सुपर चैट, सुपर थैंक्स, उसी से ही फ़ायदा होगा डियर, है ना। और वो सब तो बहुत कम ही लोग करते हैं, सुपर चैट, सुपर थैंक्स। तो क्या बोलते हैं, उतना कुछ फ़ायदा नहीं है। पर आप बोल रहे हैं कि हाफ मोनो जैसे हो रहा है ना आपका, तो आप प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं करके, है ना। और मेरे में तो वैसे स्टार्ट नहीं हुआ था जब मेरा हाफ मोनो हो गया था, तो मतलब प्रोडक्ट ऐड करना मेरा अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब हफ्ता दो पहले, 2 हफ्ता पहले स्टार्ट हुआ है ना। तो हाफ मोनो करने से आपका प्रोडक्ट टैग वाला ऑन हो जाता है, और सुपर चैट, सुपर थैंक, ये सब स्टार्ट हो जाता है। बाकी तो जो ऐड से जो मिलता है ना, ऐड से जो हमारा रेवेन्यू बनता है ना, वो तो फुल होने के बाद ही बनता है ना। अभी मेरा हाफ है तो भी मेरे में ऐड आता है ना। मेरे जितने भी वीडियो हैं लॉन्ग और लाइव सब में ऐड आता है, लेकिन ना उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अभी मेरा चैनल फुल मोनो नहीं हुआ है। जब फुल मोनो हो जाएगा ना तब उससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा, है ना। बस 9 मिनट और करूँगी लाइव, उसके बाद मैं एंड करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मेरा मसाला भी बॉयल हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। बहुत ही राजू सपना फैमिली, हेलो डियर, हेलो राजू सपना जी। आपका लाइव स्टार्ट हुआ डियर? लाइव स्टार्ट हुआ आपका? सपना जी आपका लाइव स्टार्ट हुआ? कैसे हैं सपना जी, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। अभी नहीं हुआ है, ओके। और कितना दिन लगेगा डियर लाइव स्टार्ट होने में? कुछ आया है नोटिफिकेशन वगैरह? और कितना दिन लगेगा आपका लाइव आने में? कुछ नोटिफिकेशन हो जाएगा कुछ दिनों में? अच्छा, 1 महीना लगता है स्टार्ट होने में, अच्छा जी। ठीक ठीक, ओके। 1 महीना लगता है क्या? ठीक। और कैसे हैं आप बताओ? और सुनाइए, खाना पीना हो गया आप सब लोग का? बढ़िया है क्या? हाँ जी, सब लोग बढ़िया हैं, खाना पीना हो गया। आप बताइए दिया। अभी मैं सॉस के लिए शूट कर रही थी ना ब्लॉग,
तो इसीलिए आज मैं इतना लंबा लाइव की हूँ, है ना, नहीं तो नहीं लगता इतना लंबा लाइव। तो चलिए अब थोड़ा से ऑफ करके बात करती हूँ। पूछ पूछ बाबू दिख रहा है, पीछे बाबू दिख रहा है, अच्छा। हाँ वो सोया नहीं है ना, मैं इधर बिजी हूँ तो बार बार आता है। अब सुलाऊंगी उसको भी, सोया नहीं है और मेरे बिना सोता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे उससे, वो मेरे लाइफ में आता है बीच बीच में कभी कभी, हेलो फ्रेंड ऐसे बोल के ना जाता है लाइव में। हाँ अब उसको ना सुलाऊंगी, जा रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा भी अब हो गया इधर का, है ना। और एंड भी करूँगी लाइव को, बहुत टाइम हो गया लाइव को चलाते चलाते, अब बंद करूँगी। और बताइए आप लोग